Hello friends, welcome to MidMind 119. In today's video, we are going to learn about coronary angiogram in detail. और इस डायग्राम की हेल्प से हम coronary arteries को easily समझेंगे जो एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. First, let us understand the basic anatomy of coronary arteries. But उससे पहले हम बात करेंगे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में. बेसिकली एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि हेल्प करता है ब्लॉकेज देखने में. जो हार्ट के ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एक स्पेशल डाई और एक्सरे का यूज़ होता है. एंजियोग्राफी क्यों करते हैं? टू शो हाउ मच ब्लॉकेज इज़ प्रेजेंट, हेल्प अस प्लान ट्रीटमेंट, पेनलेस और यूजुअली कंप्लीट होता है मिनट्स में. और एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है. मान लो हमें कोई ब्लॉक वेसल मिली है जिसमें ब्लॉकेज है, उसमें एक टिनी बैलून लाइक डिवाइस इंसर्ट करते हैं उस ब्लॉकेज और जो आर्टरी ब्लॉकेज हुई हो उसको हम फिर इन्फ्लेट करते हैं वो जो ब्लॉकेड वेसल होगी उसको ओपन करने में. और कभी कभार उसमें एक स्टेंट भी डालते हैं जो एक मेटल मैश होता है ताकि वो वेसल जो है वो ओपन रहे. और इससे फिर ब्लड फ्लो जो है वो रेस्टोर हो जाता है. चेस्ट पेन होती है वो भी रिड्यूस कम हो जाती है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी करता है. नाउ लुक एट दिस एलसीए को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एलसीए आ कहाँ से रही है. तो उसके लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा. ये जो है ये बॉडीज़ लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको हम आयोटा बोलते हैं. ये एक्ट करता है एज मेन हाईवे फॉर ऑक्सीजन रिच ब्लड. इसको दो में डिवाइड किया गया है. एक है राइट आयोटिक साइनस और दूसरा है लेफ्ट आयोटिक साइनस. जो राइट आयोटिक साइनस है it gives rises to the right coronary arteries, and the left aortic sinus it gives rises the left main coronary arteries which splits into LAD, LCX. Now look at this LCA that originates from left coronary sinus of aorta. It also divides into two. The first one is LCX or CX and the second one is LAD. Now we will discuss this LAD first, left anterior descending artery. As you can see, D1, D2, S1. These are the branches that arises from LAD. This D1, D2, these are diagonal branches. And these S1, these are septal branches. These supplies blood to the anterior wall of left ventricle, intraventricular septum and apex of heart. In coronary angiography, LAD is divided into three segments. Number one is the proximal LAD, second the mid LAD, and the last distal LAD. Now look at this. From the origin of LAD at LCA, up to the first major septal branch or first diagonal branch, this portion is called proximal LAD. This supply blood to the large portion of anterior left ventricle and major part of intraventricular septum. Clinically, it is the most dangerous site of blockage.
ये वाला पोर्शन ब्लॉक होने की वजह से लार्ज एंटीरियर एमआई भी हो सकता है और इवन कि सडन डेथ भी हो सकती है। एंड दिस proximal LED lesion has worst prognosis. Now from after first septal or first diagonal branch up to the near apex or this D2 dimensional branch 2, from there this one is called the mid LED. This supply blood to the anterior wall of left ventricle and septum. And beyond this mid LED के बाद जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं distal LED. Now this second one, the LCX, this also has branches OM1 and OM2. That means optus marginal arteries that give supply blood to the lateral wall of left ventricles. And this LCX means left circumflex artery. This portion is the left coronary arteries. Now we will discuss about right coronary arteries, the RCA. This RCA is arising from the right aortic sinus, as the LCA is rising from the left aortic sinus. The RCA is arising from the right aortic sinus. This RCA, right coronary artery. As you can see, this also has branches. SA, that means sinoarterial nodal artery, and this is the conus branch, and this one is the right ventricular, and this AO is the aorta, and this LV is the left ventricle. Use it to assess the LV cavity, mitral regurgitation, wall motion, etc. etc. And the second one is this LAO view. That means left anterior oblique. This one shows the LV shape, septal and lateral wall motion, aortic root, और इसका पर्पस होता है EF देखना, रीजनल वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी देखना, और वैल्यू रिग्रेटेशन जो होती है उसको देखना। और फिर लास्ट में आता है ये वाला, लास्ट में ये वाली डायग्राम आती है। दिस लास्ट वन इज द renal aortic angiography symbol, shows abdominal aortic with both renal arteries, that is used in renal angiography, hypertension, VOCAB, renal artery stenosis, etc. etc. And now at last we will discuss about these labels and their meaning. The first one is the
LCA, that means left coronary artery. LAD, left anterior descending artery. D1, this D2, these are the diagonal branches of LAD, and this S1, these are the septal branches of LAD. CX or LCX, these are the circumflex artery, and the OM, optus, this is the optus. Marginal arteries, branches of the RCA, right coronary artery, and the PDA or PD, this is the posterior descending artery. RAO, right anterior oblique. LAO, left anterior oblique. लास्ट में एक को रिव्यू करेंगे। LCA जो है, LCA निकलती है लेफ़्ट आयोटिक साइनस से, जिससे फिर दो आर्टरीज निकलती है, एक LAD और एक निकलती है LCX। LAD में अपनी ब्रांचेस होती है D1 D2, इनको बोलते हैं डायगोनल ब्रांचेस, एंड जो S ब्रांचेस होती है इनको बोलते हैं हम सेप्टल ब्रांचेस। और इस LAD के जो है अपने 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल LAD, एक होता है मिड LAD, एक होता है डिस्टल LAD। प्रॉक्सिमल LAD जहाँ से LAD अराइज होती है फ्रॉम LCA से, वहाँ से डायगोनल 1 या सेप्टल 1 ब्रांच तक जो एरिया है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल LAD। और डायमेंशन और जो ये डायगोनल ब्रांच है वहाँ से डायगोनल ब्रांच सेकंड तक उसको बोलते हैं मिड LAD। और फिर डायगोनल ब्रांच सेकंड से जो बाकी फर्दर जो फर्दर आर्टरी है उसको बोलते हैं हम डिस्टल LAD। और उसके बाद हमने बात की थी LCX के बारे में, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बारे में। इसके अपने और ब्रांचेस होती है, जैसे ओप्टस, मार्जिनल आर्टरीज हो गई है। तो ये हो गया था हमारा लेफ़्ट करोनरी आर्टरीज। अब दूसरा राइट करोनरी आर्टरीज था। जो राइट करोनरी आर्टरीज है ये राइज होती है फ्रॉम राइट आयोटिक साइनस से, और इसकी भी अपनी ब्रांचेस होती है, जैसे SA साइनो आर्ट्रियल नोडल एरिया, और कोनस ब्रांचेस होती है इसकी, राइट वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती है, अक्यूट मार्जिनल ब्रांच होती है। और जो ये राइट करोनरी आर्टरी है RCA है, इसमें से एक और आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं हम PDA या PD, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमने बात की थी जो ये नीचे 3 डायग्राम्स है। पहली वाली डायग्राम जो है इसको बोलते हैं RAO डायग्राम, राइट एंटीरियर ओब्लिक, जिसमें AO आयोटा होता है, LV लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और हमने बात की थी LAO, जो LAO व्यू होता है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक व्यू जो होता है। लास्ट में जो ये वाली डायग्राम थी इसको हम बोलते हैं रिनल आयोटिक एंजियोग्राफी सिंबल डायग्राम।
जो शो करती है एब्डोमिनल आयोटिक विद बोथ रिनल आर्टरीज, जो यूज़ होती है रिनल एंजियोग्राफी में, हाइपरटेंशन वोकअप में, रिनल आर्टरी सेक्नोसिस में। और लास्ट में आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।